कंडक्टेंस, मेटेलिक कंडक्टेंस एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। मेटेलिक कंडक्टेंस को लेकर काफी डिटेल में फिजिक्स में चीजें आती हैं, स्पेशली द लाइक फर्स्ट एंड सेकंड यूनिट ऑफ फिजिक्स 12th स्टैंडर्ड, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। वहां पे तुम मेटेलिक कंडक्टर से ही डील कर रहे होते हो। क्लियर? यहाँ पे हम सिर्फ डिफरेंस देखेंगे मेटेलिक कंडक्टर्स और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स में, एंड आफ्टर डिफरेंशिएटिंग देम वी आर नॉट गोइंग टू डील विथ मेटेलिक कंडक्टर हियर। Mainly in chemistry we need to deal with electrolytic conductance. Clear? उससे ही हमें डिटेल में देखना है. So due to movement of free electrons there is a conductance in metallic conductors. इनमें जो conductance होता है because of movement of free electrons. Clear? So यहाँ पे free electrons के movement के कारण conductance है. But in case of electrolytic conductance the conductance is there clear due to movement of free ions. यहाँ पे जो ions होंगे उनके मूवमेंट के कारण कंडक्टेंस आएगा हमारे पास. सेकंड, नो मैटर और मेटल ट्रांसफर टेक्स प्लेस. यहाँ पर नेट मूवमेंट जीरो का. लेट्स से वी हैव वन मेटेलिक वायर. If one electron is moving from one point to second point, let's say this is one first point, second point, वो यहाँ से यहाँ मूव किया है, तो यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन सेकंड पॉइंट वाला इलेक्ट्रॉन थर्ड पॉइंट पे मूव किया होगा, यहाँ पे मूव कर गया होगा. सो देयर इज नो नेट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन मटेरियल मैटर टेक्स प्लेस इन केस ऑफ मेटेलिक कंडक्टर. जब भी मेटेलिक कंडक्टर से कुछ इलेक्ट्रॉन करंट पास होगा, नेट मूवमेंट जीरो होगा. एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गया तो दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चला जाएगा, यहां पर और तीसरा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो यहां पर नेट मूवमेंट जीरो होगा. बट इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, whenever we pass the electric current, some chemical reaction takes place. तो यहां पर नेट ट्रांसफर भी होता है चार्ज का, मैटर का, आयंस का, और केमिकल रिएक्शंस भी होती है. क्लियर? So no change in chemical properties, no transfer of matter takes place, but in case of electrolytic, matter transfer takes place in terms of ions. Chemical property of electrolyte solution changes. Chemical reactions हो जाएंगी. हम इलेक्ट्रोलिसिस में यही परफॉर्म करते हैं ना. इलेक्ट्रोलाइट लाइटिक सॉल्यूशन में करंट पास करते हैं और कुछ केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म करते हैं. टेम्परेचर डिपेंडेंसी दोनों में अलग अलग है. On increasing temperature, metallic conductance decreases, while in case of electrolytic conductance, on increasing temperature, metallic conductance increases. Clear? कोई बताएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है यहाँ पर? Why in one case conductance is increasing, another case conductance is decreasing? क्या रीजन है? सर इलेक्ट्रोलिटिक सेल में ना मोबिलिटी बढ़ जाती है टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद में आयंस की. Basically in case of electrolytic cell, on increasing temperature, mobility of ions increases, their interaction decreases, वो free move कर पाएंगे. Clear? ज्यादा velocity होगी. But in case of metallic conductance, on increasing temperature, now the vibration increases. जो मेटल एटम्स होंगे, आयंस होंगे, उनका वाइब्रेशन इंक्रीज होगा और उसके कारण इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रेजिस्टेंस मिलेगा वाइब्रेशन के कारण, तो उनका कंडक्टेंस कम हो जाता है. कॉपी कर लो जल्दी से इतना.
हो गया है कॉपी? Dependency of electrolytic conductance. Solute-solute interaction. See, basically in case of electrolytic conductance, there is three types of interaction. First one, solute-solute interaction. Second one, solute-solvent interaction. And the third one is solvent-solvent interaction. और जो भी ये तीनों इंटरेक्शन है दैट विल डिसाइड द मूवमेंट ऑफ द आयंस, वो मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट करेंगे. कम इंटरेक्शन होगा तो कम रेस्ट्रिक्शन होगा, कम रेजिस्टेंस होगा. if you have more interaction then definitely there will be more resistance, more restriction for the movement of ions. Clear? Greater the interaction between ions, lesser the conductance of the solution. मतलब कोई भी conductance, कोई भी interaction बढ़ेगा तो हमेशा conductance कम हो जाएगा. So if all these three, 1, 2 and 3 interactions are less, then the conductance will be more. Clear? Solvent-solvent interaction, more the solvation, solute-solvent interaction, second one, more solvation, lesser the conductance. देखो, solute solvent interaction को solvation term से denote किया जाता है. solvation मतलब कोई भी solute particle को solvent ने कितना ज्यादा सराउंड किया है, कितना ज्यादा उसके साथ interaction हो रहा है, उसे solvation कहते हैं. So जितना ज्यादा solvation उतना कम conductance. Clear? Less interaction between solute solvent particle, more the conductance. So तीनों ही interaction conductance को decrease करते हैं. यदि वो कम हुए तो conductance ज्यादा होगा. थर्ड पे आते हैं, solvent solvent interaction. Lesser the solvent solvent interaction, more is the conductance, that is lesser is viscosity. So basically जो solvent solvent interaction है इसको denote करते हैं हम by viscosity. Viscosity is the term. पढ़ा है तुमने viscosity फिजिक्स में अब तक या नहीं पढ़ा है? शायद 11th में ही आ जाता है ना तू. हाँ सर. तो viscosity जितना ज्यादा viscous fluid होगा उतना बेसिकली solvent solvent interaction रहा होगा. So उसमें ions के movement को resistance मिलेगा. Greater the viscosity, lesser the movement of ions through the solvent. Clear? So तीनों ही interaction basically conductance को decrease करते हैं. कर लो कॉपी.
हो गया है कॉपी? हाँ सर। When we increase the temperature, all three factors, all three interactions decreases, so electrolytic conductance increases. टेम्परेचर बढ़ने पे सारे के सारे अट्रैक्शन फोर्स कम होंगे, सोल्यूट सोल्यूट, सोल्यूट सॉल्वेंट एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट, जिसके कारण सारा जो भी कंडक्टेंस है वो इंक्रीज होगा। क्लियर? अच्छा, इसके अलावा टेम्परेचर के अलावा ये जो इंटरेक्शन है दे आल्सो डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड कंसंट्रेशन। इलेक्ट्रोलाइट वीक है, स्ट्रॉन्ग है, क्लियर, तो उनके नेचर पे भी डिपेंड करेगा इंटरेक्शंस, एंड एट द सेम टाइम इट आल्सो डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन वी कैन चेंज, वी कैन इंक्रीज द कंसंट्रेशन, वी कैन डिक्रीज द कंसंट्रेशन। तो जो लास्ट वाला फैक्टर है, बेसिकली हम टेम्परेचर को ज्यादा चेंज नहीं करने वाले हैं, क्लियर। So we are not going to change the temperature, we are not going to change the nature of electrolyte, वो भी फिक्स होगा, बट हाँ हम कंसंट्रेशन इजीली चेंज कर सकते हैं। सो हम इस पूरे चैप्टर में, इस पार्ट में कंसंट्रेशन का वेरिएशन मैक्सिमम टाइम देख रहे होंगे, ऑब्जर्व कर रहे होंगे, कैलकुलेशन कर रहे होंगे उसके रिस्पेक्ट में। क्लियर? सो दिस थ्री इंटरेक्शन डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, कंसंट्रेशन एंड नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। चलो कॉपी कर लिया है ना पूरा पेज ये? हाँ सर। चलो कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है, पहले हम वो डिफाइन करते हैं। ऑलरेडी ये तुमने फिजिक्स में भी देखे होगी, ठीक है। रेजिस्टेंस, डेफिनेशन लिख लो पहले तो रेजिस्टेंस की। क्या होती है डेफिनेशन, क्या पढ़ा है तुमने? स्वाति क्या होगी डेफिनेशन रेजिस्टेंस की? इट इज द हिंड्रेंस, बोलो। करंट के फ्लो को जो ब्लॉक करता है वो रेजिस्टेंस। सो बेसिकली कितना ब्लॉकेज होता है करंट के फ्लो को, कितना हिंड्रेंस प्रोवाइड होता है, उसे रेजिस्टेंस बोलते हैं। लिखो, द हिंड्रेंस प्रोवाइडेड बाय सॉल्यूशन on the passage of current, the hindrance provided by a solution on the passage of current, the hindrance provided by the solution on the passage of current. Generally, if we are talking about the resistance in case of electrolytic cell, तो let's say ये हमारा फर्स्ट इलेक्ट्रोड है, ये हमारा सेकंड इलेक्ट्रोड है, क्लियर।
The distance between this electrode is L. इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो L ले लिया. इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया को हमने लिख दिया A. Clear? L is the distance between electrode, cross sectional area is A. So as you have already learned in physics, resistance is directly proportional to L by A. Distance between two electrodes and inversely proportional to area. चलो मैं इसको explain भी करता हूँ. जितना ज्यादा distance होगा इन दोनों electrodes के बीच में, उतना ज्यादा ions को move करना पड़ेगा और उतना उसे resistance मिलेगा. Now, greater the area, more the number of ions will move from one electrode to another electrode. Clear? Lesser the resistance. So area बढ़ाओगे, resistance कम होगा. उनके बीच में distance increase करोगे, तो resistance बढ़ने लगेगा. Where L is distance between electrodes. जो फिजिक्स में शायद तुम ये देखते थे डिस्टेंस और लेंथ ऑफ द कंडक्टर. अच्छा, L बाय A को है ना सेल कांस्टेंट भी कहा जाता है. किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लिए एक कांस्टेंट होता है, फिक्स होता है जनरली. वी डोंट चेंज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड, देयर डिस्टेंस, सेल कांस्टेंट, और इसका जो यूनिट होता है मीटर इनवर्स या फिर सेंटीमीटर इनवर्स. प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट रो आ जाएगा, रो L बाय A. रो क्या होता है? रेजिस्टिविटी. रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस. Even Ohm's law is also applicable. V is equal to IR. वो इलेक्ट्रोलाइटिक रेजिस्टेंस के लिए भी वैलिड है. R is equal to V upon I. चले हम आगे. कॉपी कर लिया है सभी ने? हाँ सर. इसके बाद नेक्स्ट टर्म आता है इसमें कंडक्टेंस. denoted by G. It is the inverse of resistance. Basically, resistance is a hindrance provided by a solution when we pass the current through it. Conductance होगा, it is the easiness of current provided by the solution when we pass the current through it. Clear? So कितना easily current flow हो रहा है, कितने easily ions flow हो रहे हैं, उसे conductance बोलते हैं. और mathematically it is defined as inverse of resistance.
G equal to 1 by R. So R को हम लिख सकते हैं रो L by A. Rho can 1 by rho can be written as 1 by resistivity can be written as conductivity kappa. Kappa is conductivity or specific conductance. चलो यूनिट्स देखते हैं हम सभी के। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? ओम। ओम। रेजिस्टेंस के बाद अब रेजिस्टिविटी का यूनिट बता दो क्या होगा? R इक्वल टू रो L by A. सो L by A का यूनिट था सेंटीमीटर इनवर्स, इसका यूनिट हो जाएगा ओम सेंटीमीटर, और ऐसा यूनिट की बात करोगे तो ओम मीटर। क्लियर? G कंडक्टेंस का यूनिट। सो कंडक्टेंस को हमने डिफाइन किया है 1 अपॉन रेजिस्टेंस। क्लियर? सो 1 अपॉन रेजिस्टेंस देयर इज ओम इनवर्स, कुछ ये हो जाएगा, व्हिच कैन आल्सो रिटन एज एस। ठीक है, इसे साइमंस भी कहा जाता है। अब हम बात करें कैपा की, तो इसका यूनिट हो जाएगा ओम इनवर्स 1 अपॉन रेजिस्टिविटी इज कैपा, उसको यहाँ पे ये भी लिख लो 1 अपॉन रेजिस्टिविटी। ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, या फिर ओम इनवर्स को हम लिखते हैं सीमेंस पर सेंटीमीटर। One more unit, SI unit is this.
कर लिया है कॉपी? स्वयं प्रकाश हो गया इतना कॉपी? यस सर। चलो इसे डिफाइन करो, कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी को। कंडक्टेंस तो चलो हमने डिफाइन कर दिया था, इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस। कंडक्टिविटी कैसे डिफाइन करोगे? संकेत, कैपा, कंडक्टिविटी की डेफिनेशन क्या होगी? संकेत, कैन यू हियर मी? यस सर। क्या डेफिनेशन होगी बताओ? सर मतलब करंट कितना इजीली फ्लो हो सकता है। नहीं, कंडक्टिविटी की डेफिनेशन नहीं होगी, वो तो कंडक्टेंस की होगी। कंडक्टिविटी की डेफिनेशन क्या होगी? कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टेंस, जो मैंने अभी लिखा है स्क्रीन पर, यही इसकी डेफिनेशन होगी। Conductivity is equal to conductance when the distance between electrode is 1 centimeter and the cross sectional area is also 1 centimeter square. इसका मतलब ये तो 1 यूनिट वॉल्यूम हो गया, लेंथ इनटू एरिया 1 सेंटीमीटर क्यूब. So kappa equal to G when the volume is 1 unit, volume is 1 centimeter cube, that is 1 ml. So conductivity can be defined as conducting power of 1 ml of the solution. clear? इसको हम ऐसे डिफाइन करेंगे, it is conducting power of 1 ml. जनरली हम सेंटीमीटर में डील करते हैं, ml की जगह तो मीटर भी ले सकते हो, मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, जो भी यूनिट लेना है, 1 ml. और यहाँ पे मोर स्पेसिफिक लिख दें 1 यूनिट, 1 ml of the solution. क्लियर? 1 ml सॉल्यूशन का जो भी कंडक्टिंग पावर होगा, दैट इज कंडक्टिविटी. Is that okay? You can write 1 unit volume. Conductance and conductivity both are additive in nature. देखो इसका मतलब ये हुआ, लेट से हमारे पास एक सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में एक सोल्यूट है, एक सॉल्वेंट है. वी कैन राइट कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस ड्यू टू सॉल्वेंट प्लस कंडक्टेंस ड्यू टू सोल्यूट पार्टिकल्स. दोनों का अपना कुछ इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन होगा एंड वी कैन एड देम टुगेदर टू गेट द कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन. सिमिलरली कंडक्टिविटी इज आल्सो एडिटिव इन नेचर, हम ऐड करके टोटल ले सकते हैं. Conductivity of solution is conductivity for solvent plus conductivity for solute.
even if in a solution we have 2 3 4 5 different kind of solute, सबको ऐड करोगे total conductivity आ जाएगी. Conductivity total is equal to conductivity due to first particle, due to second, due to third, up to last, जितने भी उसमें present होंगे. नेक्स्ट इसमें आता है फिर मोलार कंडक्टिविटी एंड मोलार कंडक्टेंस. देखो, बोथ मोलार कंडक्टिविटी एंड मोलार कंडक्टेंस आर सेम. जैसे कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस अलग अलग होता है, मोलार कंडक्टिविटी मोलार कंडक्टेंस में डिफरेंस नहीं है, दोनों ही सेम है. नेम से क्लियर होता है. मोलार मींस फॉर 1 मोल. एक मोल यदि हमने कोई भी इलेक्ट्रोलाइट लिया है, then whatever the conducting power of all the ions which is provided by 1 mole of the substance, 1 mole of the electrolyte is called molar conductivity. Clear? Molar conductivity of an electrolyte
So molar conductivity of an electrolyte is the conducting power of all ions furnished by 1 mole of an electrolyte present in a solution. So यहाँ पे जो restrictions आए हैं वो आए हैं अमाउंट पर, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए, उसमें जितने भी आयंस प्रेजेंट होंगे उसके कारण कंडक्टिंग पावर। क्लियर? कंडक्टिविटी में जो रेस्ट्रिक्शन आया था वो आया था वॉल्यूम पर, वहां पर 1 ml में जो भी आयंस है उसका कंडक्टिंग पावर था, और मोलार कंडक्टिविटी में 1 मोल कितने भी वॉल्यूम में प्रेजेंट हो उन सभी का कंडक्टिंग पावर। तो दोनों में जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है, यहाँ पर वॉल्यूम पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, वी कैन हैव एनी वॉल्यूम, 1 लीटर 2 लीटर 5 लीटर 1000 लीटर, बट इन केस ऑफ कंडक्टिविटी वॉल्यूम शुड बी 1 यूनिट, 1 ml ले लो या 1 मीटर क्यूब ले लो, जो भी है 1 यूनिट लेना है हमें वहां। कॉपी कर लो, मैं एक साथ एक्सप्लेन कर दूंगा तुम्हें कि क्या लिखा था, कॉपी करते चले जाना।
धनंजय कॉपी कर लिया है क्या? हाँ सर कर दिया। हाँ सर। चलो देखना, molar conductivity, basically the conducting power of 1 mole of an electrolyte. There is no restriction on वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। तो हमने यहाँ पे क्या किया, कंडक्टिंग पावर लिया 1 ml सॉल्यूशन का इनटू वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन व्हिच कंटेन्स 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट। So 1 ml का कंडक्टिंग पावर इनटू वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन व्हिच कंटेनिंग 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। So kappa is by definition it is the conducting power of 1 ml of the solution. यहाँ पे से kappa से रिप्लेस कर दिया फर्स्ट टर्म को। सेकेंड टर्म में हमने VML एज्यूम किया, ये वो वॉल्यूम है which contains 1 mole of an electrolyte. So kappa, conducting power of 1 ml of the solution into volume of the solution which contain 1 mole of an electrolyte. क्लियर? अब हमने थोड़ा सा कैलकुलेशन एक्स्ट्रा यहाँ पे परफॉर्म किया है टू रिप्लेस वॉल्यूम V. मोलारिटी बाय डेफिनेशन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml into 1000, और यहाँ पे हमने मोलारिटी को रिप्लेस किया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट 1 मोल लिया है हमने, और वो वॉल्यूम लिया है जिसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है। सो V is the volume in ml which contain 1 mole of an electrolyte. So number of moles of solute is 1 upon volume in ml V ऊपर 1000 as it is, लीटर कन्वर्जन। यहां से V को रिप्लेस कर दिया, V इक्वल टू 1000 by m आ गया, और इस V को रिप्लेस कर दो यहां पर, ये वो V है जिसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है। क्लियर? सो kappa as it is from year to year, और V आ गया है हमारा 1000 by molarity. So this is the final relation for the molar conductivity. डेरिवेशन पता होना चाहिए, बट इसमें जो फॉर्मूला है फाइनल वो हमें मेनली ध्यान रखना होता है। इज दैट ओके? kappa into 1000 upon molarity is molar conductance. अब यहां पर सबसे ज्यादा जो मैटर करता है वो करता है यूनिट्स, किसके क्या यूनिट्स हमने कंसिडर किए, कब कहां पे क्या लिया गया है। क्लियर? चलो देखते, हमने यहाँ पे वॉल्यूम को ml में कंसिडर कर रहे हैं ना हर जगह। So kappa is the wall conductivity for the 1 ml of the solution. kappa का जो यूनिट होगा वो कंपल्सरी पर सेंटीमीटर वाला होगा। क्लियर? और यदि हम बात करें लैम्डा m की, मोलार कंडक्टिविटी की, तो इसका जो यूनिट होगा वो होगा सेंटीमीटर वाला। ये यूनिट हो जाएगा। kappa is Siemens per centimeter, lambda m is Siemens centimeter square per mole. चलो मैं तुम्हें डिराइव करके ही बताता हूँ कि कैसे आया है एक यूनिट। यदि तुम देखोगे lambda m by definition conducting power of 1 ml of the solution, मतलब kappa को ले लेते हैं हम, तो kappa का यूनिट है 10 into, इसके बाद वॉल्यूम है, कौन सा वॉल्यूम है, ये वो वॉल्यूम है यहाँ पर which contains 1 mole of an electrolyte. So volume centimeter cube per mole of the electrolyte. Clear? So this is the unit of kappa and the unit of volume which contain 1 mole of an electrolyte. Centimeter cube per mole. 1 सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, यहाँ 2 बच जाएगा, तो Siemens सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल is the final unit for molar conductivity. ध्यान रखना इस फॉर्मूले में हम ऐसा यूनिट यूज नहीं करते हैं, इसको डिफाइन ही ml में किया गया है। So we need to use unit always in centimeter in this formula. Clear? क्योंकि यदि तुम इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करोगे, मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे, तो ये 1000 की जगह कुछ और नंबर आता है, जो हमें सिर्फ इसी यूनिट में ध्यान रखना है, कंफ्यूजन नहीं होगा कभी भी। Is that okay? श्रीतोष, सुयश, क्लियर है इतना? यस सर। यस सर।
यूनिट कन्वर्जन भी देख लेते हैं, ऐसा यूनिट दी है तो कैसे कन्वर्ट करना होगा हमें। कॉपी कर लो पहले केपा और लेमडा एम का यूनिट। केपा का यूनिट कन्वर्जन 1 पर सेंटीमीटर, इसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करोगे मीटर में। सो 1 सेंटीमीटर इज 10 टू द पावर -2 मीटर। डिनोमिनेटर में -2 आएगा तो ऊपर +2 आ जाएगा। क्लियर? या यहां से तुम्हें कन्वर्ट करना है 10 टू द पावर -2। हम आते हैं लेमडा एन के यूनिट कन्वर्जन पर। सो सेंटीमीटर को तो मीटर में कन्वर्ट करोगे 10 टू द पावर -2, यहाँ पे स्क्वायर है तो 10 टू द पावर -4 आ जाएगा। इफ यू गो फ्रॉम मीटर स्क्वायर टू सेंटीमीटर स्क्वायर, हम मीटर से सेंटीमीटर पे जाएंगे तो 10 टू द पावर +2 आ जाएगा। 1 मीटर इज 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर, स्क्वायर है तो +4। सिंपल सा यूनिट कन्वर्जन है दोनों का। वहां पे मीटर सेंटीमीटर डिनोमिनेटर में थे तो जस्ट अपोजिट हुआ। जैसे हमने मोलार कंडक्टिविटी डिफाइन किया था, kappa into 1000 upon molarity, in the same manner we can define equivalent conductivity also. So equivalent conductivity lambda n is equal to kappa into 1000 upon normality. सिर्फ मोलारिटी की जगह नॉर्मलिटी आ जाएगा डिनोमिनेटर में। नॉर्मलिटी which is number of gram equivalent per unit volume, जैसा हमने डिफाइन किया था लास्ट लेक्चर में। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी
इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी हो जाएगा मोलार कंडक्टिविटी अपॉन एन फैक्टर। हमने ये रिलेशन यूज किया है, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इनटू एन फैक्टर। सो जब तुम नॉर्मलिटी को डिनोमिनेटर में रिप्लेस करोगे मोलारिटी इनटू एन फैक्टर से, सो मोलार कंडक्टिविटी आ जाएगा, डिनोमिनेटर में बचेगा एन फैक्टर। It is a conducting power of all ions furnished by 1 gram equivalent of an electrolyte. So basically उसमें था 1 mole of the substance, इसमें 1 gram equivalent of the substance। छोटा सा डिफरेंस है बस। चलो एक दो क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं इस पर। अब हम एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 सेक्शन H, क्वेश्चन नंबर H1 एंड H2। H1 H2 एक्सरसाइज 1 पार्ट 1, ये दोनों क्वेश्चन ट्राई करो। एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 H1 एंड H2।
हमें मोलारिटी दे रखी है H1 में 1/10. Resistance is also given 245 ohm. Calculate the specific conductance, that is kappa, and the molar conductance, that is lambda m. If the electrode cell are 4 centimeter apart and the area of cross section is also given 4 square 7 square centimeter. चलो सबसे पहले तो हम रेजिस्टेंस का ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं. रेजिस्टेंस इक्वल टू रो विच इज 1 अपॉन केपा इंटू एल बाय. रेजिस्टेंस हमें दिया है, केपा कैलकुलेट करना है. केपा आ जाएगा resistance L by L is given 4 centimeter, area is given 7, 1 upon 245. सॉल्व करने पे जो भी आएगा फर्स्ट पार्ट का आंसर, और यूनिट होगा इसका सीमेंस पर सेंटीमीटर. इज दैट ओके H1 फर्स्ट पार्ट? सुयश, इज दैट ओके? अथर्व? Yes, sir. अब हम यदि इसका सेकंड पार्ट देखें जिसमें हमें लेमडा एम कैलकुलेट करना है, सो लेमडा एम का हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, केपा इंटू 1000 अपॉन मोलारिटी. क्लियर? चलो लेमडा एम इक्वल टू केपा फर्स्ट पार्ट से आ जाएगा इंटू 1000 अपॉन मोलारिटी विच इज 1/10 0.1. सो 4 इंटू 1000 अपॉन 7 इंटू 245 इंटू 0.1. यूनिट आएंगे इसके एज सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल. Is that okay? H2 पे चलें. आंसर आया किसी का H2 का? The equivalent conductance of 0.1 normal solution of MgCl2 is given 97.1. ये हमें lambda m दे रखा है, ये नॉर्मलिटी दे रखी है 0.1 normal. The cell with electrode that area is also given 1.5 centimeter square and the length is given 0.5 centimeter. A cell when electrode this filled with this solution, how much current will flow when the potential difference between the electrode is 5 volt? चलो हमें पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है, करंट हमें कैलकुलेट करना है, रेजिस्टेंस हमें कैलकुलेशन करना होगा और उसको उसमें V इक्वल टू IR में रखना होगा.
चलो देखो R को लिखा 1 अपॉन केपा इंटू L बाय A। केपा का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया मोलार कंडक्टेंस वाले फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से। क्लियर? केपा इंटू 1000 अपॉन नॉर्मलिटी इज इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, और केपा को निकाल के फिर सेकंड्स में रख दो। लेंथ इज गिवन 0.5 सेंटीमीटर, एरिया इज गिवन 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, रेजिस्टेंस आ जाएगा। एंड वंस यू गेट द रेजिस्टेंस तो करंट के लिए वाला फॉर्मूला लगा दो, ओम्स लॉ, V अपॉन R। So V is given in the question 5 volt, करंट आ जाएगा एम्पियर में। हो जाएगा ये क्वेश्चन? किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन में? देवदत्ता, धनंजय, हर्षल, करण, क्लियर है इतना? हाँ सर। हाँ चलो होमवर्क में सेक्शन H रहेगा, पार्ट 1 पार्ट 2 बोथ। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं हम।